Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss cell physiology from DRS, and the first topic is cell membrane composition. So cell membrane are composed primarily of phospholipids and proteins. Two components: phospholipids and proteins. Phospholipids have a glycerol backbone. First, we are going to discuss phospholipids. Phospholipids have glycerol backbone, which is the hydrophilic, mean water soluble or water loving head, and two fatty acid tails. Fatty acids have glycerol backbone and two fatty acid tails, and fatty acid tails are hydrophobic, water insoluble. The hydrophobic tails face each other and form a bilayer. Who form bilayer? Fatty acid tails from bilayer, okay, and backbone is formed by glycerol. Then lipid soluble substances, for example oxygen, carbon dioxide, steroids, hormones cross cell membrane because they can dissolve in hydrophobic lipid bilayer. Hydrophobic who is hydrophobic in the lip and the cell membrane structure? Fatty acid tails, okay. Water soluble substances, for example sodium chloride, sodium ions, chloride ion, glucose. Water cannot dissolve in the lipid of the membrane, but may cross through water filled channels or pores, or may be transported by carriers. Now we will discuss proteins. Proteins are of two types: integral proteins and peripheral proteins. Integral proteins are anchored to embedded in the cell membrane through hydrophobic interaction. Integral protein कैसे cell membrane के अंदर attached होती हैं? Through hydrophobic interactions. Hydrophobic word related हमने एक चीज ऊपर देखी है, that is hydrophobic lipid bilayer tails in the cell membrane structure. Okay, integral proteins are also attached to hydrophobic interactions may span the cell membrane. Include integral proteins. What they include? Ion channels, transport proteins, receptors, and guanosine 5-triphosphate binding protein, G proteins. These were integral protein. Now we are going to discuss the peripheral proteins. Peripheral proteins mean they are in the periphery. They are not embedded in the cell membrane, are not covalently bounded to to membrane component, are loosely attached to cell membrane by electrostatic interactions. Okay. So अगर हमारे पास पूछा जाए क्वेश्चन, एक एमसीक्यू आ जाता है एग्जाम में कि हमारे पास जो प्रोटीन्स होती हैं वो कैसे हमारे पास अटैच्ड होती हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ, तो वी विल टेक द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन. बिकॉज प्रोटीन्स की बात हो रही है तो प्रोटीन्स तो हमारे पास दोनों प्रोटीन्स आएंगे ना, इंटीग्रल और पेरिफेरल. जो इंटीग्रल की बात होगी तो हाइड्रोफोबिक टिक करेंगे, अगर हमारे पास पेरिफेरल की बात होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक टिक करेंगे. लेकिन अगर जनरली प्रोटीन की बात होगी तो फिर हम दोनों को टिक करेंगे. ऐसा एमसीक्यू फरवरी 2024 में आया था मॉर्निंग में. इंटरसेलुलर कनेक्शंस के बात कर लेते हैं. इंटरसेलुलर कनेक्शंस में हमारे पास टाइट जंक्शंस हैं और गैप जंक्शंस हैं. जो टाइट जंक्शंस हैं उनको हम क्या कहते हैं? जोना क्लूडेंस. व्हाट आर जोना क्लूडेंस? आर द अटैचमेंट बिटवीन सेल्स ऑफ एन एपिथेलियल सेल. एपिथेलियल सेल्स में कौन से हमारे पास अटैचमेंट्स होती हैं? टाइट जंक्शंस होती हैं, जोना क्लूडेंस होती हैं. ठीक है. मे बी इंटरसेलुलर पाथवे फॉर सल्यूट depending upon the size, charge and characteristics of tight junctions. May be tight as in the renal distal tubule or leaky, permeable as in the renal proximal tubule and gallbladder. जो tight, ये important MCQs है. जो tight है वो हमारे पर renal distal tubule में, ओके. और जो लीकी हैं ये लूज हैं और परमिएबल हैं, ये हमारे पास renal proximal tubule में है और गॉल ब्लेडर में है. दिस इज एन important MCQs. उसके बाद गैप जंक्शंस आर अटैचमेंट बिटवीन सेल्स दैट परमिट इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन. बिकॉज दीज आर गैप जंक्शंस. गैप में हमारे पास तो इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन को अलाउ करेंगे.
फॉर एग्जाम्पल परमिट कंट्रोल एंड इलेक्ट्रिकल कपलिंग बिटवीन मायोकार्डियल सेल्स। मायोकार्डियल सेल्स में हमारे पास कौन से होते हैं? गैप जंक्शंस होते हैं। एपिथेलियल सेल्स में टाइट जंक्शंस होते हैं। टाइट जंक्शंस में भी लीकी और इम्परमेबल। टाइट हैं तो वो रीनल डिस्ट्रीब्यूल में टाइट जंक्शंस हैं और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और गॉल ब्लैडर में लीकी हैं।